In this video lecture, we will study about electric field. Electric field. In order to explain the non-contact force between the charges, we assume that there is a field created by the charged particle in a space surrounding इट ओके। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे लगाता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फील्ड का कॉन्सेप्ट एज्यूम करते हैं। ठीक है, सो इफ आई डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज or system of point charges or a charged body within which at any point if a second charge is brought, comma, it experiences an electrostatic force. This region or space is called electric field due to first charge or system of charge or the charged body. Okay, it is a region or space around a point charge or the system of point charges or a charge body which at any point if the second charge is within which at any point if a second charge is brought, it experiences an electrostatic force. This region or space is called electric field due to first charge or system of charge or the charge body. Okay, तो यही definition है। Now let us see the electric field intensity. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हर एक चार्ज पार्टिकल या सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल अपने स्पेस अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हियर विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू point charge. Okay, suppose this is a point charge Q and I want to know the electric field intensity at point P. Okay, we are interested to find electric field intensity at point P due to this point charge Q. Suppose this point is at a distance r from this charge. Okay, and this field will be in this direction. Okay, now this electric field intensity, electric field intensity
is defined as force on unit test charge. Force on unit test charge. So E vector defined as limit. Suppose if I take a test charge Q naught and this Q naught tends to 0, force experienced by this Q naught by this charge Q naught. Limit Q naught tends to 0 into this F vector by Q naught. Okay, from here you will get this will not be equal to. So here it will be KQ by Q into Q naught. You know, force between these two charges Q naught and Q will be KQ naught by R square, and this divided by this Q naught into R cap. Okay, and this Q naught will get cancelled out. So KQ R square R cap will be E vector, right? Now this can be written as, this can also be written as KQ by RQ into R vector. ठीक है, this is electric field intensity at point P. Okay, due to this charge Q. Okay, this magnitude of this electric field intensity can be written as KQ by R square. Okay, at R distance from Q, magnitude of electric field intensity due to this charge Q will be KQ by R square, and you can see electric field intensity is having a direction in this direction due to this positive charge. So you can also say that electric field intensity is a vector quantity. Here one thing you have to note is test charge Q naught is an imaginary charge that exerts no force on nearby charges. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं Q नॉट जो था एक इमेजिनरी चार्ज है, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए इसको यूज किया. ठीक है, ये Q नॉट के वजह से अगल बगल के किसी भी चार्जेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं और इसको डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, लेट अस नाउ सी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Properties of electric field intensity. Okay, first property is it is a vector quantity. It is a vector quantity. Its direction is the same as the force experienced by positive charge. Suppose in a region, suppose this is a point charge Q, this is a positive point charge. Suppose force experienced by this point charge is in this direction, so I can clearly say that electric field in this region is in this direction. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे दिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहते हैं. ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, and we know it is a vector quantity.
इट्स एसआई यूनिट, अगर इसके बारे में बात करें तो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम इसका एसआई यूनिट होगा। थर्ड पॉइंट, the third property, electric field due to positive charge is always away from it, while electric force or electric field due to negative charge is towards it। ओके, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से अवे फ्रॉम दी चार्ज होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स इट। लेट अस सी द फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्स ऑन a point charge is in the same direction of electric field on positive charge, and in opposite direction on a negative charge। F vector, so F vector equals to QE है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, सपोज charge Q is kept here, positive charge, force on this will be in the direction of field। Suppose here negative charge is kept and electric field is in this direction, so force on this will be opposite to the direction of field। ठीक है, okay, force on positive charge will be in the direction of field and force on negative charge will be opposite to the direction of field। Fourth property, it obeys principle of superposition। Position, that is field intensity due to charge distribution is vector sum of the field intensities due to individual charges। है ना, ये सेम है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हियर सपोज देयर आर सेवरल चार्जेस
Q1, Q2, Q3, Q4 and Qi. Right? We have to find the electric field intensity at point P. Suppose this is Ri. Okay? We know that electric field intensity will be vector sum of electric field intensities due to all these charges. है ना? हर एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका वेक्टर सम. सो ई वेक्टर विल बी समेशन ऑफ के क्यू आई बाय आर आई होल क्यूब एंड आर आई वेक्टर. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. क्यू आई, दिस इज ith charge suppose. So for the ith charge I am writing this and sum of all these charges. So if I is 1, I takes value 1 to 10. So it will be sum of all the electric field due to all the charges. ठीक है. Electric lines of force. Okay, electric lines of force और simply electric field lines भी कहते हैं इसको. We know it is a imaginary line surrounding the charge. Okay, तो एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज. So electric field lines around the positive charge will be like this. That means if a positive charge free to move is kept, we will move along this line. Will move along this line. This is basically a imaginary line. Simply in case of negative charge, if I keep a positive charge which is free to move, it will move along this line. Okay, so electric field lines are basically imaginary lines surrounding the charge particle. Okay, second point, can never intersect. Electric field lines can never cross each other or intersect. ठीक है, electric field lines do not cross each other. ठीक है, अगर क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. इसको देखते हैं इस पॉइंट को. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर. थर्ड पॉइंट, इट कैन नेवर फॉर्म और इट कैन नेवर बी क्लोज्ड लूप. सपोज this is the positive charge and this is the negative charge. Electric field lines originate from positive charge and terminates at negative charge. These are not the closed loop. Remember, these are not the closed loop as it is formed in case of magnetic field lines. Okay. ठीक है, इस तरह से फील्ड लाइंस बनेगा इफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर केप्ट इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर. ओके, सो हियर द फील्ड लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर. अगर ये क्रॉस कर रहा होता तो क्या होता कि एक पॉइंट पे फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाता है ना. कैसे, हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट will be given by the tangent drawn at this point in the direction of field. है ना, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा होता क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन में टेंजेंट हो गया, यानी कि दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता. राइट, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, so fourth point I can write tangent on the line of force
force at a point in an electric field gives the direction of intensity. Gives the direction of electric field intensity or simple intensity. So, positive charge free to move follow the line of force. है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज इफ पॉजिटिव चार्ज इज लेफ्ट फ्री टू मूव, इट विल मूव थ्रू दिस पाथ, दैट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स. ओके, ये लिखे हैं. नेक्स्ट, the number of lines originating or terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge. Okay, is proportional to the magnitude of charge. Suppose this is charge plus Q. Suppose number of field lines here, for example, there is 4 field lines originating from this charge. Suppose if I take charge 2Q, that means field lines should be double. Here field lines will be 3. So number of field lines will be double than this. Okay, ठीक है, यही है इसका मतलब. Number of field lines originating or terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge. Okay, तो अगर यहाँ पे Q प्लस Q रखें और यहाँ पे suppose here it is plus Q and here it is minus 2Q charge, so number of field lines terminating here at this point will be proportional to number of field lines originating from here will be suppose 4 and terminating here will be 8. Okay, if there are crowded lines, suppose a space is denoted with the lines, electric field lines which are very close, this denotes strong electric field. If lines are not crowded, that there is a distance between these electric field lines, so this denotes comparatively weak electric field. ठीक है, अगर लाइन्स नजदीक है that means it denotes strong electric field, and if there is a gap between the lines it denotes weak electric field. Okay, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज in a region, suppose electric field lines are like this. ठीक है, suppose there is a point A here and C here. Okay, so I can clearly say
the electric field at A, electric field intensity at A will be greater than the electric field intensity at C. ठीक है. Let us take another point. If there is no electric field in a region, there will be no line of force. If there is no electric field, there will be no lines of force. ओके. और अगर हम किसी सरफेस की बात करें तो सपोज दिस इज अ कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज दिया गया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will always be perpendicular to the surface of the conductor at the originating point. Originating point पे surface of the conductor के perpendicular होगा हमेशा electric field. ठीक है. Okay, let us see the field lines for same type of charges. Suppose there are two positive charge plus Q, है ना. इन दोनों चार्ज के वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें तो इससे भी बाहर निकलता हुआ फील्ड लाइंस, इन दोनों का इंटरेक्शन की वजह से ये फील्ड लाइंस ऐसा कुछ डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. यहाँ ऐसा हो जाएगा. And these electric field lines are of equal magnitude, so there will be a region equidistant to both the charges where the electric field intensity will be 0. है ना, ये ऐसा निकल जाएगा. यस, ठीक है. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होगा. ठीक है, ये ऐसा. ओके. इक्वल मैग्नीट्यूड था चार्ज का और सेम साइन पॉजिटिव चार्ज. लेट अस नाउ सी फ्यू एग्जांपल क्वेश्चंस. सपोज 2 point charge, 2 point charges, each plus 4 microcoulomb are separated by 20 centimeter. 20 centimeter. What is E electrical intensity at a point 20 centimeter, E magnitude 20 centimeter from each of them. What is the magnitude of electric field intensity at a point 20 centimeter from each of them? ठीक है. यहाँ पे सपोज 2 चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम. ठीक है. दीज 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ देम. ठीक है. दोनों से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है. तो दोनों से 20 सेंटीमीटर, तो सपोज ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा या स्पेस में इधर होगा या इधर किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं. ठीक है. सो एज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सपोज दिस इज पॉइंट P विच इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस 4 कूलम विल बी इन दिस डायरेक्शन, सपोज E1, and electric field due to this charge will also be in this direction, suppose E2. ठीक है. So I have to find
the magnitude of resultant of E1 and E2. So you can write E1, magnitude of E1 will be K Q by R square. This is 20 centimeter and this is also 20 centimeter. Okay, KQ by R square है ना. And magnitude of E2 can also be written as KQ by R square. तो ये KQ by R square Q का वैल्यू दिया हुआ है. K होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q होगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 and R square is 20. That means it is 0.2 होल स्क्वायर. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिए, इसको कूलम में कन्वर्ट किए थे. तो यहां से ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम. E2 भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 है ना. नाउ वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट. Resultant will be E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos 60 degree whole root. Cos theta here will be 60 degree. How? This is 20, this is 20, this is also 20, equilateral triangle. So this is 60, so this will also be 60. ठीक है, तो रिजल्टेंट ER से अगर डिनोट करें तो ER will be, suppose this is E, so E square plus E square plus 2E square cos 60 degree. ठीक है, cos 60 degree ले लें. cos 60 degree is half, so it will be root 3E है ना. And we know the value of E is, so it will be 9 root 3 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Magnitude of resultant electric field, which will be in this direction. ठीक है. Let us take one more example. Suppose this is a square of side length A. Okay. 4 charges plus Q minus Q plus Q and minus Q are kept on the edges. What will be the electric field intensity? Electric field intensity at center O. ठीक है, सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है. ओके, नाउ लेट अस चेक. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन. ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन. एंड वी नो दैट मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज O is at same distance from plus Q and this is also at same distance from this plus Q. So due to this negative charge, electric field intensity will be in this direction, and due to this negative charge, electric field intensity will be in this direction. You can say these two, as these are vector quantities, they will cancel out each other. These two will cancel out each other and these two will also cancel out each other. So electric field intensity at the center will be 0. ठीक है. Now let us check example 3. Suppose two charges -4 microcoulomb and 16 microcoulomb are separated by 20 centimeter. ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे होमवर्क में करना है. ठीक है, 20 centimeter. Locate the point where the net electric field intensity
due to these charges is 0. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज चार्जेस इज 0. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन विच यू शुड ट्राई योरसेल्फ. थैंक यू.